So this is how we did the last time. It was for one-way quotation. Now let me, if you want one more problem also we can do, and then we will start off with two-way quotation. Just a recap. Two is going to be USD. I'm doing the last one. Stroke INR. I will say I write the quotation anyway. You can write both ways. There is no hard and fast rule. You always write number of INR per USD. Okay? It's easier to remember. 43.8375. So look at the given quotation. These are the given quotation. Now see observe the required quotation. I wanted my INR on the side, but my SEK in the given quotation is on the left hand side, whereas I want it on the right hand side. So I need to do 1 by of this, if you remember, right? So I will say from 2. From 2, I'm going to derive USD for 6.0025. Okay? So what do I get this? 0.16. Right. Derived from 2. So when I need the required quotation, what does the required quotation say? INR is on the left hand side. I can also eliminate USD here. Can I? Multiplying, say I'll call this 3. I'll call this 3. 3 is from this thing. So I will say 1 into 3. 1 into 3 on the left hand side, what do I get? On the left hand side I have INR stroke USD. And then I have USD stroke SEK, right? So can I strike off these two directly? Let me strike it off directly. Yes, ma'am. I struck it off. So can I multiply 1 and 3 on the left hand side? On the left hand side I have 1, 2, 3 into 3 here. So do I get 7.303? Yes, ma'am. So that is what we actually want. See, everything is on the same side we require, and this is the answer. So this is how you do one-way quotation. Can I start with my two-way quotation now? Two-way Ma'am, quotation. the final answer should be till what decimal? Sorry, final answer should be Till how many decimal points? 4. But this is fine here. This is fine here. Okay, Just okay. mention as you get. So now I'm going to start with two-way quotations. I'll start with the first one. Ma'am, these sums were two-way quotation. These are two-way. I just took one way, one side of it. मैंने सिर्फ बिट लेके आपको दिखाया था कैसे करना है. Okay. Recap. ठीक है? So now I will start with the proper two-way quotations. 44.0875. See, observe. Problem में से मैंने दो सबको change किया है क्योंकि it is easier for us to remember.
If you don't remember which is stronger currency, which is weaker currency, you can always remember number of INR per USD, number of USD per euro, right? That is how you remember. It's easier to remember with this because per slash always stands for per. So I would say 44.2925. Okay? USD INR. Then USD stroke is going to be 1.3015, 1.3020. Okay. Now I need to find out. Okay. So what am I going to do here? I will eliminate one currency, right? So when I eliminate, एक चीज अच्छी तरह से यहाँ ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, प्लीज ध्यान दो यहाँ पे. मुझे एक करेंसी नहीं चाहिए. कौन सा करेंसी नहीं चाहिए? यूएसडी नहीं चाहिए. देखा आपने रिक्वायर्ड कोटेशन में यूएसडी नहीं है, तो मैंने यूएसडी को ऐसे सीधा एलिमिनेट कर दिया, जिसका मतलब है मुझे 1 and 2 को मल्टीप्लाई करना है. आई विल से कोटेशन 1 and 2. ठीक है? This implies 1 and 2. If I multiply directly, I can eliminate USD. Did you understand that? So I will directly multiply this. Are you following? Equal to this star this. Same thing. किसी भी चीज का साइड चेंज मैंने नहीं किया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है. बिड इनटू बिड, आस्क इनटू आस्क. समझ में आया आपको? All of you here, do you understand? मैंने कोई साइड चेंज नहीं Ma'am, how did you get 1.302? दिया है ना बेटा. यहाँ पे 1.3020. यहाँ पे गिवन कोटेशन देखो ऊपर 3020 था, वो जीरो नहीं आ रहा है लास्ट डिजिट से. इवन इफ आई प्लेस द जीरो, इट बिकम्स लाइक दिस. ठीक है? Okay, okay. इट ट्रंकेट्स द जीरो. इफ यू वांट आई विल ट्राई डूइंग दिस. वेट, अब पे जीरो का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई विल चेंज दिस. नहीं हो रहा है, सॉरी. ठीक है? आर यू ओके नाउ? Yes. एनी डाउट सो फार? यहाँ पे साइड चेंज नहीं था, सो आई डायरेक्टली मल्टीप्लाइड. बिड इनटू बिड, आस्क इनटू आस्क. एनी डाउट सो फार? So I will start with No, my ma'am. GBP. Sorry, I changed the sides of all. $1.8015, correct? 1.8025. Second quotation is going to be USD SGD. SGD is Singapore dollar. SGD USD. SGD stroke USD का क्या आया मुझे? सॉरी, 1.55. ठीक है? So what is actually asked? GBP SGD. Right? अभी दिया हुआ कोटेशन देखो, रिक्वायर्ड कोटेशन देखो. कौन से करेंसी में साइड चेंज है आपको और कौन सा करेंसी नहीं चाहिए. मैं ये एनोटेशन निकाल देती हूँ. इट्स बिकमिंग कंफ्यूज. ठीक है? तो ये जैसे हमारा स्क्रीन नीचे आता है, वो भी खुद नीचे आ जाता है. ठीक है? अभी कौन सा करेंसी चाहिए, कौन सा करेंसी नहीं चाहिए? Ma'am, we don't require USD. यू डोंट रिक्वायर यूएसडी, राइट? तो आपको डायरेक्टली कोटेशन देख के कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है cancel. So can I directly cancel here? So which means it implies that I need to
multiply directly. Multiply 1 and 2. So I will say, can I call this 1, 2? So 1 into 2. और I will write another line here. ठीक है, एक और लाइन बना लेती हूँ, एक और स्टेप ऐड करती हूँ. 1 into 2. एक छोटा सा स्टेप ऐड करते हैं यहाँ पे, ध्यान दो. So I'm going to say same way. ठीक है, same. This into this and this into this. But what do I get here? When I cancelled, I got SGD. Correct? मैंने directly कोई साइड चेंज नहीं किया था. SGD stroke GBP मिला. समझ में आ रहा है? बाकी क्या बचा है? SGD and GBP. Correct? But then मुझे required quotation में कैसा चाहिए? GBP SGD उस तरफ चाहिए. So what I will do? What can I do now here? Just observe the quotation. When I cancel this, I got SGD, GBP, and I multiplied directly. So to make it the other way, what did I do when we started with direct indirect? I said I'm going to do 1 by. So 1 by bid equal to ask, 1 by ask equal to bid, right? So to bring it this way. देखो मुझे क्या मिला है, क्या मालूम है, right? So I'll say 1 divided by 2.91, or I'll write it this way, equal to 1 divided by this one. ठीक है? Ma'am, हाँ बेटा. 1 but divided. we have GDP on the top only, no? हाँ बेटा. Sorry, I didn't get you. क्या हुआ? So the first one is GBP. So by cancelling that, we get GBP slash SGD. किधर है GBP? GBP was on this side, correct? SGD Yeah. was on this side. So when I directly cancel, my SGD comes. SGD जहाँ पे है वहीं पे आएगा. मैंने कोई साइड चेंज नहीं किया था यहाँ पे. Yes. Right? Okay. बट मुझे Yeah. कोटेशन आया है SGD GBP आया है. मुझे उल्टा GBP SGD चाहिए. Okay. Yeah. You understand now? Yeah, ma'am. All of you here? Yes, ma'am. Any doubts? So here there was another step involved. यहाँ पे हमने directly किया था, जो quotation जो साइड में चाहिए था वहाँ पे आ गया था. पर बाकी सब में, पर ये वाला एक सब में हमें उल्टा करना पड़ा. Correct? Any doubts so far? So now let's see the next sum, third sum. समझ में आ रहा है सबको? मैम एक मिनट स्क्रॉल करो ना नीचे. हाँ नीचे. मैं 2 मिनट रोकती हूँ. You just observe what is given. ठीक है? ये तीनों sum देखो. Let me start with my third sum. मैं actually for convenience sake I'll paste it here. It's easier for me to see. ठीक है? ऊपर नीचे नहीं जाऊँगी. Can I remove all these annotations if you're okay? Yes, ma'am. I'll remove all these annotations. So I will do my fifth sum here. It says USD per euro. एक और चीज मुझे बताना है आपको. See, आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है, सम ऐसे फॉर्मेट में दिया है या मेरे फॉर्मेट में आया, इसे नंबर ऑफ USDs पर GBP. ठीक है? मतलब I always give the weaker currency on the left hand side and the stronger currency on the right hand side.
But see, if this is given to you, you should be able to judge which is weaker currency, right? Supposing they say USD stroke INR, then you can easily make out. बाकी currencies आप make out नहीं कर पाओगे, correct? But then, so what I do is, जब भी एग्जाम में ऐसे दिया रहता है, आप साइड चेंज मत करो, क्योंकि मैंने एक पेपर बनाया तो मैं ऐसे ही दूंगी. आपको समझ में आ रहा है? Are you all following? तो मैम वीकर करेंसी पहले लिखेंगे. आपको कैसे मालूम पड़ेगा वीकर एंड स्ट्रॉन्गर करेंसी? यहाँ पे INR is always INR is anyways a weaker currency than USD. तो ज्यादा यूनिट्स INR के ही होंगे in terms of USD, correct? Yes. You can always make out this is INR, right? But when compared to USD, euro is stronger, correct? तो अगर ऐसे कोटेशन दिया है, I can make out because I mean मैं देख रही हूँ कोटेशन. जब आप लोग भी देखने लगोगे 2-3 साल जाएगा, आप इजीली मेकआउट कर पाओगे. पर फिलहाल के लिए पेपर में अगर मैंने जैसे दिया है, आप साइड चेंज बिल्कुल मत करो. समझ में आ रहा है? मैं ये स्टेप जो है साइड चेंज का वो करके ही आपको दूंगी एग्जामिनेशन पेपर में. आर यू फॉलोइंग? Okay, okay. आप देखो गिवन प्रॉब्लम और जो मैंने किया है उनका साइड चेंज मैंने किया है, राइट? आई हैव टेकन द वीकर करेंसी on my left hand side, stronger currency on my right hand side. I always do that because it is easier to read and remember. Number of USDs per euro. ये step मैं आपको ये वाला दिया प्रॉब्लम से ये वाला करके ही आपको दूंगी, ठीक है? तो अच्छी तरह से याद रखो, don't change the side. वो प्रोसेस करके मैं दूंगी आपको. Are you all following? Yes. So you can keep it as it is and then do the problem. Then I say CHF is 1.4020. This 20 if you're not comfortable, ठीक है? And then find CHF and ठीक है? Now let me come to this. What do you actually want? Which currency you don't want? Look at the required quotation. What USD. USD you don't need. Can I directly strike off? हो रहा है क्या? Direct. हाँ मैम. ऑपोजिट साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है. जब ऑपोजिट साइड में है तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो. दोनों कोटेशन में, एक में लेफ्ट हैंड साइड में है, एक में राइट हैंड साइड में है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर पाओगे. सो आई एम गोइंग टू कैंसिल डायरेक्टली. डायरेक्ट कैंसिल, डायरेक्ट कैंसिल, करेक्ट? नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? All I require is CHF euro. उसका भी कोई दिक्कत नहीं है. Both are on the required side. Same side. दोनों required side में है. So can I directly multiply? Say I will call this as 1, 2. 1 I will say 1 into 2. क्या मिल रहा है देखिए पहले. So I got CHF euro. दोनों आगे है. जो uncancelled है उनमें से CHF currency आया, euro आया, correct? So I will say this into this, ठीक है? Which you very see. This is all I require. दोनों CHF left hand side में चाहिए था, euro right hand side में चाहिए था, वो भी आ गया मुझे. Any doubts so far? Can I end this meeting, restart the meeting? I just have 1 minute. And it's practically not possible. I'll end this meeting, call you again. Okay, ma'am.